ओम. संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय पहिला स्वसंवेद्य स्वरूप वर्णनम. श्री गणेशाय नमः. श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः. शौनक उवाच. धूम्रवर्णावतारस्य श्रुत्वा चरितमुत्तमं नानाख्यानं समायुक्तं न तृप्तोऽहं महामते. अधुना वद दक्षस्य संवादं मुद्गलस्य च. पुनः किं पृष्टवान् दक्षो मुद्गलाय महर्षये. सूत उवाच. श्रुत्वा महात्म्यमुख्यं स धूम्रवर्णात्मकं परं दृष्टरो मा प्रजानातः पुनः प्रपच्छ तं मुनिं. दक्ष उवाच. धन्योऽहं सर्वभावैश्च त्वतः श्रुत्वा महाद्भुतं चरितं धूम्रवर्णस्य सर्वसिद्धिप्रदायकम्. अधुना वद विप्रेश योगं पूर्णपदप्रदम्. अष्टौ विनायकः प्रोक्तास्तेषां योगे स्वरूपकं. स्वानन्दः कीदृशो योगस्तथैव कीदृशः सुशान्तिदः पूर्णयोगस्तेषां रूपं सुविस्तरात्. सूत उवाच. एवं पृष्टो महायोगी दक्षेण हर्षसंयुतः तं जगात् शृण्वस्व त्वं द्विजैः शौनक सौख्यदम्. मुद्गल उवाच. स्वानन्दात् स्वेच्छया दक्ष ब्रह्माणि निःसृतानि तु असत्सत्समनेतीति चत्वारि मायया प्रभोः. एकैकाक्ष्यत भावेन सृष्टं तैः सौख्यरूपकं. ततो बोधस्ततः सोऽहं ततो बिन्दुर्महामते. ततश्चतुर्विधं विश्वं स्थूलं सूक्ष्मं समात्मकं. नाद एतानि ब्रह्माणि मिलितानि परस्परं निजसत्ताविहीनानि जातानि दैवयोगतः. स्वस्वव्यापारजं भोगं लेभिरे न कदाचन. ततस्तैश्च तपस्तप्तं घोरं चित्तैकभावतः. यस्मै कस्मै नमः शोक्त्वा मूलभूताय सर्वपैः दिव्यवर्षसहस्रेण प्रसन्नो गणपोऽभवत्. हृदिस्थं दर्शयामास मन्त्रमेकाक्षरं स्वकं. तं दृष्ट्वा हर्षयुक्तानि जयपुर्मन्त्रं ततः परं. गते वर्षशते पूर्णे दर्शयामास स्वं वपुः. नरकुञ्जररूपं तु दृष्ट्वा विस्मितमानसैः सद्यस्तकृपया ज्ञानं प्राप्तं तद्रूपबोधकं. ज्ञात्वा स्वानन्दनाथं तं ब्रह्माणि हर्षतः परं. तमेव हृदये ध्यात्वा जयपुर्मन्त्रं सुसिद्धये. वर्षेण्यैकेन विघ्नेशः सुप्रसन्नो बभूवः. आययौ वरदानार्थं पुरस्तेषां प्रतापवान्. तं दृष्ट्वा तानि ब्रह्माणि तुष्टुः पूज्य विघ्नपं. बद्ध्वा करपुटं दक्ष स्वस्वसामर्थ्यसिद्धये. ब्रह्माण्यो ऊचुः. नमस्ते परेशाय विघ्नाधिपाय परेशां सदा सौख्यदात्रे हिताय. स्वसंवेद्यरूपाय चानन्दाय निजानन्दयोगाय ढुण्डे नमस्ते. अनाथाय नाथाय सर्वात्मनां ते सदा मोहहीनाय नेतिधराय. शिवायाथ त्रैविध्यभावप्रदात्रे निजानन्दयोगाय ढुण्डे नमस्ते. समायाथ मायास्वरूपाय द्वन्द्वप्रकाशाय सर्वात्मकायैव विष्णो. महानन्दरूपाय सर्वातिगाय निजानन्दयोगाय ढुण्डे नमस्ते. सदा सत्यरूपाय सर्वात्मने ते विकारैर्विहीनाय सूर्याय भूम्ने. अनन्ताय
विजिताय निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। अपार स्वरूपाय नानामयाय विहारेषु सक्ताय पूर्णात्मकाय महाशक्तये शक्तिरूपाय मोहिन् निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। निरोध स्वरूपां समास्थाय बुद्धिं निजानंद भ्रांतिप्रदा सिद्धिरूपां प्रविश्यैव तुर्येषु बिंबात्मकाय निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। ततः सांख्यरूपं विनिर्माय तुर्येस्तदाकाररूपाय वै बोधकाय सदा स्वात्मनिष्ठाय संकल्पहन्त्रे निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। ततो बोधरूपं विनिर्माय बोधस्वरूपाय मयाकारधाम्ने सदाखेलकायाथ नानाप्रचारिणि जानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। ततो देहिरूपाय निर्माय तं वै सदैक प्रबोधाय भ्रान्तिर्धराय स्वस्थो भ्रान्तिहीनाय सोऽहं प्रदाय निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। ततो बिंदुमात्राय निर्माय बिंदुं चतुर्धा चतुष्पादरूपेण खेलिन् अनंतस्वरूपाय देहप्रचार निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। ततो नादरूपं विनिर्माय नादस्वरूपाय तस्थाय चैतन्यदाय अजायाथ त्रैविध्य देहस्थिताय निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। समास्थाय बाह्यांतरे संस्थिताय विनिर्माय सौषुप्त रूपं परात्मन् तदाकाररूपेण चानंददाय निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। सदा स्वप्नरूपाय सर्वान्तरस्थाय सूक्ष्माय सर्वात्मने खेलकाय विनिर्माय सूक्ष्मं त्रिधा संस्थिताय निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। नमस्ते प्रभो स्थूलरूपाय तत्र विनिर्माय जागृत्तदाकाररूप सदा ह्यन्नभूताय बाह्यात्मकाय निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। गणांस्ते गणेशात्मरूपेण सृष्टांस्तवांशांश्च तान् रक्ष ब्रह्मेश दासान् सदा पादपद्मे रतांस्ते कुरुष्व निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। गजाकारतुण्डाय लंबोदराय चतुर्बाहवे शूर्पकर्णाय तुभ्यं त्रिनेत्राय पाशांकुशाद्यैर्युताय निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। नराकाररूपाय कंठादधस्थातथा एकदन्ताय रक्तांबराय महाखुध्वजाय खुवाहाय नित्यं निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। अनन्तप्रसूतिश्च ते वामभागे महासिद्धिरूपा तथा दक्षिणांगे धृते पूर्णमाये परे देवदेव निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। स्वसंवेद्य नाम्नि पुरे संस्थिताय प्रमोदादिभिः सेव्यमानाय तुभ्यं तथेक्षोः समुद्रे सुलीलाकराय निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। समाधिस्वरूपं गणेशं स्तुविमः कथं ब्रह्मणां ब्रह्मभूतं महात्मं तथापि स्वबुद्ध्या प्रमाणैः स्तुतोऽसि निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। वयं धन्यरूपा गणाधीश ते वै स्तवेनाथ पूजादिना दीनबन्धो नमस्ते नमस्ते प्रसीदाशुभूमन् निजानंद योगाय ढुंडे नमस्ते। मुद्गलोवाच एवं स्तुत्वा गणाधीशं प्रणेमुस्तं प्रजापते ब्रह्माणि तान्यथोवाच हर्षितः स गजाननः। श्रीगणेशोवाच वरान् ब्रूत हृदिस्थान् वै ब्रह्माणि तुष्टिमागतः दास्यास्म्यनेन स्तोत्रेण तपसा दुर्लभानपि भवत्कृतमिदं स्तोत्रं मम सन्तोषकारकं भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकं। यः पठेत्
पाठयेद्वापि श्रावयेन्मानवोत्तमः स भुक्त्वा ह्यखिलान् भोगानन्ते स्वानन्दोगो भवेत्। विजयप्रदमेतद्धि पुत्रपौत्रप्रदं भवेत्। धनधान्यपशूनां तु दायकं प्रभविष्यति। अंगहीनजनानां तु स्वङ्गदं रोगनाशनम्। अलक्ष्मीसङ्कटस्यैव दहनं पाठकारिणम्। विद्याज्ञानादिकं सर्वं लभते नेन निश्चितं। भुक्तिं मुक्तिं ब्रह्मभूयं पठनात् श्रवणात् किल। षट्कर्मसाधने सिद्धं परकृत्यविनाशनं। राज्यबन्धहरं चैव भविष्यति सुसेविनाम्। एकविंशतिवारं चैकविंशतिदिनानि यः पठतेत् स लभेत् सर्वमीप्सितं नात्र संशयः। एवं गणपतेर्वाक्यं श्रुत्वा ब्रह्माणि विघ्नपं प्रणम्य हर्षयुक्तानि जगुस्तं च प्रजापते। ब्रह्माण्युश्चुः वरदोऽसि गणाधीश तदा ते भक्तिमुत्तमां देहि यया महामोहे नश्य तत्र न संशयः। निजव्यापारजं देहि बोधं कथय सर्वप। कार्यं तच्च करिष्यामस्त्वदाज्ञा वशदानि भोः। सदा स्मन्निन्कटे नाथ तिष्ठ स्वभक्तकारणात्। निर्विघ्नं कुरु सर्वत्र गजानन नमोऽस्तु ते। वत्समानि कुरुष्वस्त्वस्मान् पादाश्रितानि ते। भजतां सर्वदातॄणि त्वत्प्रसादान्नमोऽस्तु ते। यद्यदिच्छामहे नाथ तत्तत्तुं सफलं भवेत्। सत्यसङ्कल्पजं सौख्यं देहि नो गणनायक। एवं तेषां वचः श्रुत्वा भक्तिभावेन तोषितः तथेति तान्यथोक्त्वा सावन्तर्धानं चकारं। अष्टौ विनायकः प्रोक्तास्तद्रूपेण गजाननः। तेषां सामीप्यगो भूत्वा तिष्ठन् सर्वार्थसिद्धये। एतत् सर्वं समाख्यातं स्वसंवेद्यस्य चेष्टितं। श्रवणात् पठनान्नृणां सर्वसिद्धिप्रदायकम्। ओमिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते स्वसंवेद्यस्वरूपवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः।